मैसेज So, good evening, everybody. Why the camera is off? All right. Good evening, everybody. And the last class of the week, Saturday. So we are starting a new lesson, the last lesson probably. And then we will recap of things which you have missed out. Job applications. Today we will be knowing what is a resume. What is the difference between a resume, a biodata, and a curriculum writing? We will also be discussing what is a cover letter, and in applying for a job, why is a resume important? What are the things you will be including in writing a resume? Who writes a resume? Why is the biodata important? And who writes the curriculum writing? How many pages will be there in a resume? How many pages are required for a curriculum writing? What are the similarities and what are the differences of a resume and a biodata and a curriculum writing? Can anybody give me an answer? Is resume an English word? Yes. क्या resume एक English word है? Yes. Yes, it's English. Yes, it's English. Definitely it is. मैं बताऊं एक बार. जब तक unless and until you're sure of it, do not open your mouth. If you're not sure, keep quiet. It is not a guessing game. Am I asking a mark you? Am I taking a mark you? So a resume is an English word, a French word, a Latin word, a Greek word. So you will say, yeah, resume is an English word. French. How do you know it is the French word? कभी किसी टीचर ने बताया है? तो कैसे जान गए आप? विदेश से जानी है? It was a guessing game. Then, so Beta, tell me, how have we come to know that this is not a French, this is not a Latin, this is not a Greek, this is not an English, and this is a French word? How? Something you will be knowing today, you will be knowing it for the rest of your life. आज जो आप जानेंगे, सब बहुत सारा myth दूर होगा कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता है. सविता बताइए कि how do you know that this is a French word? This is something very technical. Technical answers तो कोई technical person ही बताएगा ना तुमको. ऐसी हवा में तो नहीं कि हाँ ये फ्रेंच वर्ड लग रहा है कि फ्रेंच वर्ड है. क्या? Pronunciation is French. Then ये तो तुमको बताना पड़ेगा ना कि how you, ताकि बाकी भी तुमसे कुछ मदद ले सके, कुछ हिंट ले सके. गूगल कर रहे थे तुम. फोन तो नहीं करना है ना. when you are offline you attendance बना ली.
Okay guys, resume. Anybody? लैटिन वर्ड है ले, अब तो ये और भी दूसरी चीज। हाँ तो बचा क्या फिर? फ्रेंच हो गया, लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया, संस्कृत हो गया। हाँ ऑप्शन संस्कृत भी ठीक रहता है। कंफ्यूज्ड? फ्रेंच ही है। समरी होता है, किस चीज का समरी? एम्प्लॉयर का। जॉब लेने का। वो एम्प्लॉयर हुआ कि वो एम्प्लॉई हुआ? पहले तो आप यही जान लीजिए। The job provider is called an employer, and the job seeker, do not Google. फोन अभी अभी सीज हो जाएगा, अब मंडे को मिलेगा आप। ठीक है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉई कौन होते हैं पहले बताइए आप? जो जॉब सीकर है। एम्प्लॉई, द पर्सन हु इज वर्किंग, वी आर द एम्प्लॉइज, राइट? एंड हु इज द एम्प्लॉयर? जॉब प्रोवाइडर। तो बोले एम्प्लॉयर का समरी है, तो मुझे लिखना है, रेज्यूमे बनाना है, तो हम किसी कंपनी का समरी लिखेंगे कि अपना समरी लिखेंगे हम? Will you write in bullets or will you write in paragraphs? कैसे बनाते हैं रेज्यूमे? बुलेट्स। बनाया है क्या आपने, आप लोगों ने अपना? कब बनाया? ठीक है, तो उन्होंने बताया होगा कि रेज्यूमे फ्रेंच वर्ड। ऐसा कुछ बताया नहीं क्या? आप ही बताया। तो ये बोलना चाहिए था ना कि मैम आपने बताया था, तो चुप क्यों? हाँ मैंने ब्रिस्टा से बताया होगा मैंने। कंफ्यूज हो गए ना? चलो, डाउट क्लियर। Resume is a French word. The spelling remains the same. Resume, R-E-S-U-M-E. Resume is an English word which means to restart. Let's resume our class. Let's, yeah, to restart, to begin again. So we are resuming offline classes. वापस से कोई चीज को शुरू करने को कहा जाता है resume, R-E-S-U-M-E. The spelling remains to be the same. जब हम बात कर रहे होते हैं रेज्यूमे के बारे में, तो रेज्यूमे इज अ फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच में जो लास्ट कॉन्सोनेंट रहता है वो साइलेंट रहता है, लेकिन लास्ट वॉवेल रहता है वो प्रोनाउंस्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल रिज्यूम में वी आर एंडिंग विद द कॉन्सोनेंट एम, द ई इज नेग्लेक्टेड, रिज्यूम। बट इन फ्रेंच द कॉन्सोनेंट, लास्ट कॉन्सोनेंट हिडन रहता है एंड द वॉवेल इज प्रोनाउंस्ड। तो लास्ट में क्या है? R-E-S-U-M-E, resume. So the highlight is on the stress is on the M, resume, which is a French word. Now the difference between biodata and a resume. Are you confused कि resume भी तो सेम है, biodata भी सेम है? कभी आपने किसी को कहा क्या कि अपना बायोडाटा दे देना, या कहीं सुना किसी को बायोडाटा देना जॉब के लिए? बायोडाटा किसको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ बायोडाटा? ये हंस क्यों रही है? बताइए, कोई डाउट है तो डिस्कस इट आउट। नो, biodatas are given for which includes all your details about your family, your parents, your grandparents, your height, your weight. मैम बायोडाटा इनफॉर्मल होता है और रिज्यूमे फॉर्मल होता है। कोई बात नहीं है, सबका अलग अलग फंक्शन है। Biodatas carry the biological factors, how tall you are,
how short, what is your height. It has to be given, it has to be detailed about everything about you, including your qualifications. You will not write your resume, वो नहीं लिखेंगे आप, लेकिन हाँ आप लिखेंगे that अगर आपका कोई बना रहा होगा अभी तो, so the boy is pursuing BBA. Your father's name, your mother's name, your sisters and brothers, your siblings, your uncle, your aunt, वो सब सारी चीजें जो required होती है, which is going to help the proposed family, to the proposed family for any kind of marriage proposal. So biodatas are given for marriage purposes, marriage proposals. Resume, freshers लिखते हैं अपना resume. इतनी जब आप बनाओगे अपना, तो आप बनाओगे अपना resume. Freshers, which should be of 1 page. It should not be exceeding more than a page. अब आ रही दूसरी टर्म पे करिकुलम वाइटे. ये कौन सा वर्ड है? Is it English, French, Latin, what? CV. टर्म तो सुना होगा आप लोगों ने ना, CV. The full term is curriculum vitae. What's that? अगर कोई बोल रहा है तो जोर से बोलिए. CVs are higher. Somebody said something. Latin word है मैम. Very good. Curriculum vitae is a Latin word. Not French, not English, but Latin word. So mainly you have to learn the pronunciation. Resume and curriculum vitae. उसमें भी details about your academic qualifications है. Your research, your course of life, whatever you've done in your life academically, which will be required for, which will help the recruiter to decide whether you're fit for this company or not. So curriculum vitae is for people who are, persons who are experienced. People who have worked in more than 4 to 5 companies. 4-5 companies में काम कर चुके हैं. Experienced people will write curriculum vitae. You will be writing resume. Freshers resume, and experienced CV. And it can go up to multiple pages because आपको detail डालना पड़ेगा उसमें कि आपने duration किस वक्त कहाँ काम किया है. The last, the first. Currently, I'm working in this company. From this date to this date, still working. उसके पहले किस कंपनी में काम किया उसका डिटेल देना. आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहा है, जॉब टाइटल क्या रहा है. So this is for people who have work experience. Otherwise, resume for freshers, understand this, and CV for people who are working. Biodata is for marriage proposals, so never confuse with biodata, resume, and a curriculum vitae. Latin word is सही बोला है. It is a Latin word. CV Latin, resume French, biodata English word. मैम तो CV कब दिया जाता है? जब एक्सपीरियंस्ड लोग एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर होते हैं तब. आपको 4-5 कंपनीज का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप CV दे सकते हैं. Because that will include the places you have worked in. Okay मैम. Okay. Why are some people joining so late? All right.
तो 3 पॉइंट अभी डिस्कस हुआ है. Can anybody recap? People who are online, I would like to know how much attentive you are. अभी क्या पढ़ाई हुई है? शुभम बताइए आप. तो 2-3-4 पॉइंट डिस्कस हुआ अभी. Can you recap? I am just checking it out whether how much attentive you are. कौन मैम? रोल नंबर 80. Roll number 98. Okay. Then why are you so happy कि आपका नाम है? You is smiling all. हाँ बताइए शुभम. मैम अभी रिज्यूमे और सीवी के बारे में बात हो रहा था कि दोनों में डिफरेंस क्या है और यही सब. और यही सब क्या? बायोडाटा. क्या बायोडाटा? बायोडाटा क्या होता है ये बताइए आप. तो बताइए ना क्या होता है. बायोडाटा में मैम जो आपका हाइट हो गया, मतलब आपका कलर, मतलब हाइट, ये सब मतलब बॉडी के बारे में जो भी होता है वो सब होता है. बायोलॉजिकल थिंग्स हो What is जाता the है. function of a biodata? मैम बायोडाटा हम लोग मैरिज के पर्पज से यूज करते हैं और इसी सब टाइप के कुछ पर्पज से यूज करते हैं. यही सब टाइप से. मैम मतलब मैरिज में यूज किया जाता है, मैरिज के लिए बायोडाटा यूज किया जाता है. ठीक है ठीक है. What is the resume बताइए. मैम रेज्यूमे जो होता है वो फ्रेशर्स लिखते हैं जब वो किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो, और सीवी जो होता है जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं वो लिखते हैं जब वो किसी दूसरे कंपनी को ज्वाइन करते हैं तब. और रेज्यूमे कौन सा, किस लैंग्वेज से? लैटिन मैम, लैटिन. रेज्यूमे लैटिन है मैम फ्रेंच. फ्रेंच. Are you confused? मैम फ्रेंच होगा. ठीक है. Resume is a French word, whereas CV is a CV लैटिन. there are some notes which I was compiling. The job applications, when you think of applying into a job, the first thing which comes in your mind is to create a resume which should be accurate. So understanding what is a resume, it is a French word. And when you start making a resume, it should not be of, you have to concise everything in one page. The biodata can have multiple pages, or a curriculum vitae, which is a Latin word. What are you talking? You need to write down some notes. Curriculum vitae also, multiple pages. It also has the academic details about a person. The resume will carry your educational qualification, your name, your contact details, your contact details, email ID, telephone number, and your educational background details. The last is the first, right? The सबसे पहले क्या लिखोगे? First doing BBA, you have to make a table. और टेबल में सबसे लास्ट में सबसे पहले फर्स्ट डूइंग BBA फ्रॉम CIMAGE College, उसके बाद 12th, उसके बाद 10th. And then you will include your areas of expertise, a project which you have handled, areas of interest, कोई extra work तुमने किया हुआ है while you are studying, like volunteered, attended seminars, attended workshops, वो सब के सब आप डालेंगे अपना resume में.
You are going to include everything which will help the recruiter to select you. Since you already have made a resume, then you know the details. Okay, if you have made the resume, what do you understand by objective? Objective of a resume. क्या लिखा था आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव में? क्या? Resume में after you write your name, your email ID, your contact number, you write your objective, which is a statement. क्या लिखा था आपने बताइए? कुछ लिखा होगा तो बताइए ना उसके लिए. 10th one का? Ma'am, Not that. I'm talking about objective in a resume. आपने कहा कि हम लोग बनाए हैं, इसीलिए हम पूछ रहे हैं आपसे कि क्या लिखा आपने ऑब्जेक्टिव में? उसके पहले नेम, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, योर एड्रेस. फादर्स नेम क्यों लिखेंगे वहां पे हम? वहां पर नहीं डालेंगे. उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे. क्या क्या स्किल्स, हॉबीज लिखेंगे वहां पे. अब रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इसका प्लेसिंग कहाँ पर है? यस मैम, टारगेट मैम फ्यूचर में मतलब सोच सकते हैं. प्रेजेंट में भी यहाँ पे है जो भी मतलब अंडर ग्रेजुएशन में है मैम, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जो मैम आगे फ्यूचर में जो ऑब्जेक्टिव रखना है मैम टारगेट. नहीं, I'm telling you, इसका प्लेसिंग कहाँ रहता है? कहाँ पर फॉर्मेट अगर किए हुए हैं तो कहाँ रहेगा? टॉप में रहता है हेडिंग. हाँ, जैसे योर नेम, योर टेलीफोन नंबर, योर कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड योर email ID. उसके बाद you leave a space and then you write objective. Objective में आप क्या लिखते हो? Seeking to work in a company which will help me to grow. लास्ट में ऑब्जेक्टिव सबसे पहले लिखा जाता है. उसके बाद आप उसके बाद आप बनाएंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस. उसके बाद एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, एनी प्रोजेक्ट which you have completed, submitted, एनी वर्कशॉप जो तुमने अटेंड किया है. हाँ, उसके बाद आप लिखेंगे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, wherein you will write your hobbies, your interest, and then you will write your personal details. Your name, maybe your religion, which is not required, but then people write. Marital status, whether you are married or single. Permanent address. And सबसे लास्ट में आप लिखते हैं रेफरेंस ऑन डिमांड. रेफरेंस क्या होता है? when you send a resume or when you send a CV, तो सबसे लास्ट में होता है रेफरेंस ऑन डिमांड. मतलब कि कुछ ऐसे इन लोगों को कुछ लोगों के नाम और उनके फोन नंबर जो फोन करके पूछ सके कि हाँ यू नो दिस पर्सन और उस पर्सन के बारे में कुछ बताइए. तो फोन नंबर डाला जाता है रेफरेंस के लिए. They should not be anybody from your family. They should not be anybody who is your close friend, but they should be anybody who knows you academically, professionally, maybe your teachers.
Anybody you know? Somebody whom you know professionally. इसमें फैमिली मेंबर्स का रेफरेंस आप नहीं डाल सकते. You cannot put in the name of your family members. जब आप बनाएंगे, you will learn by doing it. You will create. All of us will sit and write, make a resume, a winning resume, which should be free of any grammatical error, which should be free of any punctuations, any error. जिसमें कहीं कोई error नहीं हो. सबसे अधिक mistake करते लोग objective लिखने में. करते हैं क्या? They cut, copy and paste from the Google. समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी IT का है तो ले लो उसको. और बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स लोग लिख देते हैं. Objective, you can get so many objectives on the from Google. पढ़िए जरूर. I'm not asking you मत पढ़ो, because पढ़ने से you get an idea कि कैसे लिखा जाता है. You do that. Do some research work. मैंने आपको राइटिंग स्किल में सिखाया भी था. When you want to create something spectacular, something good, research work जरूर करिए. देखिए, सुनिए, पढ़िए, कौन क्या लिख रहा है. Resume for freshers, management students. Objective for freshers, management students. देखिए क्या क्या लिखते हैं लोग. But never cut, copy, paste. Or even if you are tempted to cut and copy paste, at least know the meaning of the words you are using. You are pasting it. कभी क्या होता है? The HR will directly tell you, discuss your objective. बस वही क्या हो जाता है? You are at a loss for words because you do not know what is happening. What is this? ये तो out of syllabus हो गया question. ये तो मैम ने बताया ही नहीं था क्या कहना है. लीजिए अभी. Are you really sleeping? बता तो दिया मैंने. सबसे पहले जो कैच करता है किसी रिक्रूटर को ऑब्जेक्टिव ही होता है, बिकॉज आपके नेम के बाद सीधे ऑब्जेक्टिव एंड देन योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन. तो मैंने क्या कहा, आप पढ़िए जरूर, आप रिसर्च कीजिए. फ्रेशर्स स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव फॉर फ्रेशर्स फॉर BBA. आप यू कैन रिसर्च. Sometimes क्या होता है, the HR will come and directly tell you discuss your resume, not objective. Discuss your resume. कि तुमने लिखा है ये तुम जान रहे हो, बट हम अगर HR है तो हम समझे कि तुमने लिखा है, तुम्हारी टीचर ने लिखा है, तुम्हारी दीदी ने लिखा है, तुम्हारे फ्रेंड ने लिखा है, और इट इज जस्ट अ कट कॉपी पेस्ट. बस नाम बदल के अपना तुम्हारा. ऐसा होता है ना. एक ने बना दिया और एवरीबडी only changing the name. और क्या होता है, ऐसा हुआ था इसलिए हम बता रहे हैं ना. These are case studies. IT के स्टूडेंट्स थे, एक ने बना लिया, वेरी गुड स्टूडेंट बनाया. परसों होकर के विप्रो आ रही थी, हमने कहा ओके लेट मी सी योर रिज्यूमे. दिखाओ अपना. हाँ यस मैम, डन, ऑल डन. दे वर वेरी एक्साइटेड कि tomorrow, day after tomorrow is Wipro. Tomorrow is Wipro, and now we are going to crack it out. देखे हम, दिखाओ अपना. चलो इसे यही लैब में बैठ के दिखा रहे थे. अरे ऑब्जेक्टिव ही रॉन्ग तुम्हारा है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है. अच्छा तुम दिखाओ अपना. सब तो यही हुआ है. The whole class, the whole chickman lot, the whole class had cut, copied and pasted. उसके बाद जो यहाँ पर chaos मचा, मुझे याद है, that is why I'm discussing it out. और 1 घंटे 2 घंटे में सबका it took, जानते हो, 11-12 बजे तक स्टूडेंट वो व्हाट्सएपिंग नहीं, मैम मेरा हेल्प कर दीजिए, मैम मेरा डिफरेंट बना दीजिए, मैम मेरा ये विप्रो कंपनी के लिए. We were working till 1 o'clock at night. 1 बजे रात तक बच्चे परेशान थे. अब क्या होगा, अब क्या होगा. रेज्यूमे बन गया था ऑब्जेक्टिव. अरे बिल्कुल
So different students came up with different objectives. क्यों इतना important मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ना, the objective in the resume. और कितने लोग थे कि आज विप्रो है, आज मैम आप कुछ लिखवा रही थी, तुम कहाँ थे कल रात में 1 बजे रात में लोग काम कर रहे थे, हम उसका देके लिख ले, हम कह जो करना. You have to take particular interest. मैं आपको बता रही हूँ कि आप गूगल करिए, do some research work, but if you are taking down some words from the Google, at least know the meaning of the terms. कुछ तुमने word निकाल लिया है, तुमने यूज कर लिया है, at least know the meaning of the word. नहीं तो अगर कोई पूछ दे ओके डिस्कस योर ऑब्जेक्टिव, ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल चुप हो जाओ उसके बाद. Right? You must know what you are talking about. You must know the meaning. Isn't it? You are using high flown words. आपने यूज किया, आप जरूर यूज कीजिए because you are learning it. But at least know the meaning. So never, I will not ask you to cut and copy paste, but yes, I will ask you to research, do some research work. Research, discuss it out with me, and write your objective. It should be not more than 4 to 5 sentences. Keep it short, simple. You're a fresher, so freshers का objective भी वैसे ही होना चाहिए. Right? Seeking an opportunity to work in a company which will help me to grow and work in an amicable environment. Amicable का मतलब friendly environment. तो मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जहां मैं अपना स्किल डेवलप कर सकूं और जितना नॉलेज मुझे आता है उसको अपने प्रैक्टिकल वे में उसको यूज कर सकूं in an environment which will give me an opportunity to work. सिंपल रखिए, आप खुद बनाइए उसको, but please be very careful of the grammar. ठीक है? And it should not be, आपको 1 paragraph नहीं लिखना है, a big fat paragraph नहीं लिखना है. Objective should be not more than 4 to 5 simple sentences, so that at least you should know what I'm writing about. And objectives keep on changing. Freshers में आप कुछ और objective बनाएंगे. After working for about 2 to 3 years, you will change your objective. Right? समझ में आया कितना important चीज है ये? And please बनाइए, हमको दिखाइए, make your resume. आप already बना चुके हैं, objective आपने नहीं बनाए, याद नहीं. अब आप किसी का लिख ले, I would like to take, my objective is to take a company to the soaring heights. तो आप फ्रेशर हैं, किसी कंपनी को soaring heights तक आप कैसे ले जा सकते? आप तो बता तो रहे कि ऐसी कंपनी में काम करना आप चाहते हैं जो कि आपको आपके ग्रोथ में मदद कर सके, which will help you grow and learn at the same time, learn and earn at the same time. Learn भी कर, main thing you have to learn. The objective is a far cry. अभी आप बस जान रहे हैं कि resume is a French word. How is it different from a CV? Why cannot you compile biodata? How can you compile biodata? And what is the function of a biodata? And since आप लोगों ने कहा हम लोग बनाए हैं, तभी ऑब्जेक्टिव की बात आ गई. बना, अरे तो आप अभी तो क्लास आपका चल रहा है ना, एंड सेकेंड सेमेस्टर में इट इज ऑल अ रिपीट. अभी आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और हम आपको बनवा भी रहे हैं. राइटिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. होमवर्क तो हर असाइनमेंट के साथ, हर लेसन के साथ हमने असाइनमेंट दिया है. Whether it is writing skill, whether it is proposal writing, whether it's letter writing, तो हर बार तो मैंने आपको लिखने का होमवर्क दिया मैंने आपने. And from the very beginning I've been telling you, Pudar sir has been telling you, make a copy, start writing. Business English is all about writing and formatting. Report writing क्या है? How is it different from letter writing? What is memo? What is agenda? सबका देखिए अलग अलग फॉर्मेट होता है. टेक्निकल इंग्लिश इसी को बोलते हैं ना. This is what is business English all about.
जहां जाएंगे तो बहुत इजी भी है। यू लर्न बाय डूइंग इट। जितने आप लिखोगे उतनी आप जानोगे। ये लिटरेचर क्लास नहीं है कि संजना मैम इज टीचिंग मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड जॉन कीट्स एंड विलियम शेक्सपियर। बच्चे सुनते हैं कहानी। आपको बिजनेस इंग्लिश करना, आपको तो राइटिंग करना। फॉर्मेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको क्या करना है, समरी लिखो, समरी प्रेजेंट करो, बताओ व्हाट इज द थॉट ऑफ द राइटर। तुमको लिख के बताना है कि दिस इज द मेमो, दिस इज एन एजेंडा, दिस इज रिपोर्ट राइटिंग, and this is my resume all compiled. Understood? And now we come to the cover letters. Cover letter क्या और क्यों important आज के दिन में है? Can anyone tell me what is the importance of cover letter? पहले cover letter है क्या पहले? In today's world, you cannot send a resume without a cover letter. ठीक है? तो क्या cover letter के बारे में कभी एक टर्म आप जाने पहले? Do you know what is the cover letter? नहीं जाना आपने। Cover letter is always attached to with the resume. Like, please find attached here with my resume and cover letter for your perusal or for your kind consideration. It is a personal introduction. Yes, it is a letter supporting your resume. Resume बहुत technical है, बहुत कम लिख सकते हैं उसमें. You're just writing point to point except for the objective. Cover letter में आप अपने को identify करते हैं और अपने skills को highlight करते हैं, and you justify why you are suitable for this job and how you have prepared yourself to work in this company. Why you are the best for the job? हाँ, नहीं, how you have prepared yourself for this job. First, in the first paragraph, you will introduce yourself. In the second paragraph, you will write how passionate you are about this job और किस तरह से आपने आपको prepare किया है. नहीं, वो letter है, वो bullets नहीं है. That is a letter. ये आपका expository size थोड़ी writing style है कि 5 points of 10 points of how to play holy. आज के दिन में अगर आप only resume भेजते हैं without a cover letter, it will land in the trash can. कोई पढ़ेगा ही नहीं. दोनों को साथ में डालना पड़ेगा. ये resume पहले बनता है, उसके बाद in the first paragraph you will introduce yourself. In the second paragraph you will tell the recruiter how passionate you are about to work in this company and how you have prepared yourself for this particular job. किस तरह से आप अपने आप को तैयार किया. आप लिख सकते हैं a short paragraph like from the very beginning. I have always been very focused on developing managerial skills. आप हमसे हेल्प ले लीजिएगा. लिखेगा तो आप ही, आपको हम मदद करेंगे. आपको हम कॉमा फुल स्टॉप नहीं लिखवाने वाले हैं. आप लिखेंगे and I'm going to help you. That is a promise. And we have a lot of time. अभी तो you're only the first semester. अभी तो फाइनल ईयर तक आपके साथ हम बने रहेंगे. तो nothing to worry about. कुछ लोग बहुत डर गए हैं कि क्या होगा. डरने की बात थोड़ी है, जानने की बात है. और डर गए तो अच्छा डर गए. Because डर नहीं होगा तो तुम सीखोगे भी नहीं ना. डर के आगे चीज है. Exactly. All right, we'll discuss more in the next class. चलो आप बता लीजिए जो आप ऑफलाइन स्टूडेंट से हम पूछ रहे हैं. Now tell me what is the cover letter and why it is important. देना होता है इसलिए इम्पोर्टेंट है. Business English means technical answers, my dear. हाँ, अपने को कैसे प्रिपेयर किया आपने.
कि मैं शुरू से I was very good at managing. So then I thought that I will develop. I have cultivated this skill by taking initiative in my classroom, right from the classroom. I have been the CR of the class, वगैरह वगैरह वगैरह. अपने बारे में और क्या? A job application is a sales letter. You are selling your skills, right? Did you understand? Oh, in the next class. That's it, guys. We'll talk more.